Good morning students. Welcome back to previous class. I hope all are good. Dear students, these days we are studying about nervous system. Okay, very important and interesting study. Okay students, in previous class we learned about the stimulus and response. Then we learned about the brain. Okay, the brain has three main parts. Okay, we learned about the cerebrum, cerebellum and medulla. See this cerebrum, cerebellum and medulla. Okay students, the brain is not only the organ that controls the functions of the body. Okay, then see spinal cord, it is the spinal cord, this cylindrical and long organ. Okay, see students, this spinal cord which is connected to the brain, it is connected to the brain. Okay students, so this spinal cord also controls some of the functions of the body. Understand students? Then what is the shape? It is the spinal cord is a cylindrical, see the lambai, okay, long organ. It begins at the lower part of the brain, okay, and extend all along the back. हमारा पीछे पूरा है, यहाँ से शुरू, brain से ये शुरुआत है. It is connected to the brain. Understand students? Then it is all along the back. Then students, it is protected inside the vertebral column. We know about the vertebral column now. In previous class we already learned 33 hollow bones are there, vertebral column. Okay, so the brain protected by the skull, also the spinal cord, because they are, this brain and spinal cord are soft and delicate, and thus these organs are soft and delicate, so they protect. Okay, brain protect by the skull, then the spinal cord is protected inside the vertebral column. ये white दिखता है ना? Okay, 33 hollow bones are there. इसका अंदर है. Understand students? So the spinal cord and the brain together control the functions of the body. All movements and activities of the body are controlled directly by either the brain or through the spinal cord. Understand students? How is this happening? Okay, it is happening within milliseconds. Okay students, means this control system. See, I'll tell you. See the students, nervous, they are nervous. Nervous are present in the entire body. देखो हमारा पैरों में, okay, पैरों में nervous है, हाथ में, शरीर पूरा nervous है. Understand students? Nervous are present in the entire body, all parts of the body. Understand students? It is connected to the spinal cord. देखो ये सब spinal cord से connected है. Understand students? Connected to the spinal cord and to the brain. A spinal cord brain से connected है. Understand students? Then spinal cord connected to the brain and nervous connected to the spinal cord and to the brain. Understand students? Then why? Okay, how they are controlling spinal cord and brain? Students, because they receive information from the body through these nervous. ये nervous जाके message देता है spinal cord को. Okay, then spinal cord it is happening within milliseconds. Okay, within second 100 message जाते रहता है. Understand students? Because we are living things. Okay students, then this spinal cord and brain receive messages, information from the body through these nervous. Understand students? Also send messages to various part of the body. Understand students? तो यहाँ से message वापस आता है. Understand students? Okay, to various part of the body. Understand students? Then I'll tell you an example. See students, see this. If you accidentally step on a thorn, okay students, I'll tell you. Students, if you accidentally step on a thorn, एक कांटा में अगर हमारा पैर लग गया तो what will happen? You feel pain. Okay students, then you quickly move your leg away from the thorn. Okay students, अगर कांटा में लग गया तो हम जल्दी पैर नीचे करेंगे, पीछे करेंगे, है ना बच्चे? Why? You feel pain. That is why. Okay students, then how is this happening? See this, step on a thorn. Okay, then you step on a thorn.
you step on a thorn. Then students, next देख लो, nervous transmitting message to the spinal cord. देखो ये लाइन जा रहे हैं ना, रेड लाइन देखो, see the red line students. Okay, you can see it in the textbook. Okay, nervous transmitting message to the spinal cord, then by being moved away from the thorn. Okay students, उसके बाद हमारा पैर हम जल्दी निकाल देंगे. It is happening within milliseconds. 1 सेकंड में 100 मैसेज आता है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, हमारा पैर से, हाथ से, शरीर से, सेंस ऑर्गन से. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, you understood this example? So students, listen here also please. Spinal cord, okay, connected to the brain. Spinal cord connected to the brain. Okay, I told you already. It is, this spinal cord begins at the lower part of the brain. Okay, it is extends all along the body. Then cylindrical and long, इसका shape है. Okay, cylindrical and long organ. Then it begins at the lower part of the brain. Soft and delicate. This spinal cord is so soft and delicate like brain. Okay students, then vertebral column. Okay, this vertebral column protected the spinal cord. Okay, so the spinal cord is protected inside the vertebral column. Understand students? See, it is flexible two way. We can bend. Flexible है, ऊपर नीचे कर सकता है. Understand students? See, we can bend our back because this vertebral column is flexible. Okay, then 33 hollow bones are there. It protects the spinal cord. Understand students? Then brain and spinal cord both are connected. Understand? They together control all the functions of the body. They together control all the functions of the body. हमारा शरीर का पूरा functions, okay, spinal cord and brain control करता है. Understand students? Because messages, all nerves are connected to the spinal cord. Okay, so messages are going to the brain through the spinal cord. हमारा ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड का द्वारा मैसेज पहुंच जाता है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? देन सेंड बाय द मैसेज फ्रॉम द ब्रेन थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड टू द नर्वस. ओके, नर्वस आर all parts of the body. Understand students? Then they receive information from the body through the nerves. Okay, and send messages to various part of the body from the brain. Okay, हमारा नर्वस देखो, कांटा में हमारा पैर लग गया, नर्वस जल्दी स्पाइनल कॉर्ड का द्वारा ब्रेन में मैसेज पहुंच जाता है. कांटा में लग गया, देन ब्रेन जल्दी हमें बताता है पैर पीछे करो. Understand students? Then within milliseconds it is happening. Okay, when we touch our hand in a hot utensil, एक गर्म बर्तन में हमारा हाथ टच किया तो immediately, suddenly, quickly we withdraw the hand. हमारा हाथ जल्दी पीछे करेंगे quickly. Understand students? ब्रेन हमें मैसेज देता है. हमारा हाथ में जो नर्वस है, नर्वस जल्दी स्पाइनल कॉर्ड का द्वारा मैसेज पहुंच जाता है. गर्म बर्तन में हमारा हाथ लग गया, देन ब्रेन जल्दी मैसेज देता है, जल्दी हाथ पीछे करो. विद इन मिली सेकेंड्स इट इज हैपनिंग. अंडरस्टैंड? हमारा ब्रेन सही नहीं तो ओके, जो स्मार्ट पीपल होता है, जो जिसको अच्छे से दिमाग सही नहीं है, वो कुछ पता नहीं चलता उन लोगों को. अगर सांप पड़ा हुआ है, कोई खड़े, गाड़ी जा रहे, सब पता नहीं चलता है. वाई? ब्रेन इज नॉट गुड. दैट इज वाई ब्रेन प्रॉपर नहीं तो हमें कुछ पता नहीं चलता है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अगर हमारा ब्रेन प्रॉपर है तो इट इज ओके. ओके, देन हाउ डज दिस हैपनिंग? ओके, थ्रू द नर्वस. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? आई विल शो यू पिक्चर. देन नर्वस कंट्रोल द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. Okay students, nervous connect the spinal cord and to the brain. Then spinal cord and brain controls all the functions of the body. Then three types of nervous. Okay, first है sensory nervous, motor nervous, then mixed nervous. Okay students, three type of nervous are there in our body. Okay, then sensory nervous क्या करते हो? It carry information from the sense organs, muscles, and then internal organs and etc.
ओके हमारे शरीर का जो भी इंफॉर्मेशन है ये सेंसरी ऑर्गन्स मैसेज देता है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? सेंसरी ऑर्गन्स इट कैरी इंफॉर्मेशन ओके फ्रॉम द organs muscles and internal organs. अगर हमारे पेट दर्द होता है ओके पैर दर्द होता है, हाथ दर्द होता है, पैर दर्द होता है, हेडेक होता है, हमारे इधर दर्द होता है, तो हमारा मैसेज जो भी मैसेज है ये सेंसरी नर्वस पहुंच जाता है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? सेंसरी नर्वस है जल्दी मैसेज पहुंच जाता है इधर दर्द हो रहा है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? देन मोटर नर्वस ओके कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन. मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन. तो देने वाला कौन है? देने वाला सेंसरी नर्वस है ओके. देन पहुंचाने वाला वापस रिप्लाई जवाब कौन देता है? मोटर नर्वस लेके आता है, जवाब लेके आता है मोटर नर्वस ओके कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड से या ब्रेन से मैसेज वापस लेके आता है ओके जवाब पहुंचाने वाला है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? सो रिप्लाई लेके आता है मोटर नर्वस ओके इंफॉर्मेशन उधर पहुंचाता है सेंसरी नर्वस टू द ब्रेन और टू द स्पाइनल कॉर्ड. देन मिक्सड नर्वस also are there carry messages away from and towards. दोनों काम करता है. carry messages away and towards okay to the brain और spinal cord. मैसेज लेके आता है पहुंच जाता है, दोनों काम करने वाला मिक्सड नर्वस. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? 3 टाइप ऑफ नर्वस आर देयर ओके सेंसरी नर्वस, मोटर नर्वस एंड मिक्सड नर्वस. मिक्सड नर्वस दोनों करता है ओके मैसेज लेके आता है, देता भी इंफॉर्मेशन देता है, देन रिप्लाई लेके आता है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? देन towards the brain or spinal cord. Then they begin from the different part of the body. Our body is full of nervous. Understand students? Once again please. Spinal cord it is connected to the brain okay then shape cylindrical and long organ. It begins at the lower part of the brain okay students. Then it is so soft and delicate like brain okay. Then vertebral column it is flexible tube we can bend okay. Then 33 hollow bones are there. अलग अलग बोन्स में जोड़ा हुआ है सब ओके ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है ओके इट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड. देन स्टूडेंट्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ओके दे टुगेदर कंट्रोल ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड they together control all the functions of the body. हमारा शरीर का जो भी functions है ये दोनों okay spinal cord and brain okay brain and spinal cord they are the very important organs of the body okay students. They receive information from the body through the nervous okay and send back messages to various part of the body. हमारा शरीर पूरा मैसेज पहुंच जाता है. Then how does this happening? Through the nervous okay through the nervous okay so nervous connect the brain and the spinal cord. Then 3 nervous are there. 3 types of nervous okay. First one sensory nervous okay it carry information from the sense organs, muscles and internal organs and etc. different from the different part of the body okay. From the sense organs क्या क्या है? टंग, आइज, हम जो दिखता है, जो सुनता है, टेस्ट करता है, जो टच करता है, ये सब इंफॉर्मेशन लेके आता है सेंसरी ऑर्गन. फ्रॉम द मसल्स, फ्रॉम द इंटरनल ऑर्गन्स ऑल्सो. मेरा पेट दर्द हो गया, मम्मी बोलते हैं ना, सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन पहुंच जाता है ओके. देन मोटर नर्वस ये इंफॉर्मेशन वापस रिप्लाई लेके आता है. कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन एंड फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड ओके फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. देन to the muscles and glands okay. Mixed nervous okay carry messages away and towards to the brain or spinal cord okay students. It begins from the different part of the body. You understand? Very interesting chapter. Now you can read it and try to draw this diagrams जो pictures उसमें हैं वो ड्रॉ करना ट्राई करना होगा स्टूडेंट्स. ओके गुड बाय.